start recording. All right. So in the last class, Manya, we had completed question number 1, question number 2, you have understood already. Question number 3 also we had completed. Now today we are going to start from question number 4. So I'll be just writing the same question on another screen and then we can start. Okay, so you can see a white screen now. Okay, the questions are here, but I know the questions are very small, so I'll make it bigger. Okay, I think now the questions are comparatively visible, right? Correct? Yes. Okay, so the first question, first of all, you can see that this is a single choice question. It's MCQ. Not multiple, but you can say single choice question. One answer would be correct. So the first question is extremely simple, one line answer. 9 square A minus 9 tan square A is equal to what? 1980. What do you think, Manya? Any idea how can we solve this? 9 sec square A minus 9 tan square A will be what? So do you see something is common here? What is Yes. common? What is common? 9. 9 is common. Very good. So don't you think we can take this 9 out? Yes. So if you take 9 out, what will be inside the bracket? From the first term, if you have taken 9 common, the remaining part is only sec square A, right? Minus. From the second term also, you have taken 9 common, so the remaining part is tan square A, right? Now, don't you think, Manya, that this is our second formula, my name trick formula, Yes. right? What is the value of sec square theta minus tan square theta? 1, right? Yes. The second trigonometric identity was this only. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Here at the place of theta, we have A, right? So what is sec square A minus tan square A? That is also going to be 1. So what is 9 times 1? 1. 9. And that is our answer. Option number Yes. B. Got it? Clear? Yes. Okay. Next question. 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cos sec theta. You are having 4 options here. 0, 1, 2, minus 1. What do you think? How can we solve this? Okay, so I'll just erase everything first and then let's solve this question little here. Just a moment. Yes, so I'll be solving the question here. So you can see the screen, right? Oh, okay, one second. Yes. Okay, so we'll solve question number 2 from here and I'll be starting writing from this one. Okay, so it is written 1 plus tan theta, right? Do you know what I'm going to do? I'm going to write down this part 1 plus as it is. And can I not use here the formula of tan theta as sine theta upon cos theta? Manu, can I use this? Yes. I can use it, right? Okay. And then I can write down this sec theta as 1 upon cos theta. Why? Because we have a formula, right? Yes. So what formula I have used? I have used here, I have used 2 formulas here. Tan theta, which is sine theta by cos theta. And there is another formula that I have used that is of sec theta, which is 1 upon cos theta. Because you know मान्य है कि sec theta और cos theta आपस में reciprocal होते हैं, right? करेक्ट, तो मैंने ये वाले टर्म को तो लिख दिया फॉर्मूला में. अभी रिमेनिंग टर्म जो उसको भी ऐसे लिखेंगे सेम. सो 1 प्लस cot theta. Can you tell me what will be cot theta? If tan theta is sin theta upon cos theta, so what do you think will be cot theta? Will it not be cos theta by sin theta?
Yes. Right? Okay, cos theta by sin theta minus cosec theta. Can we not write down cosec theta as 1 upon sin theta? Why? Because that's the formula. So I'm just writing the formula again. Cot theta will be cos theta upon sin theta. And there is another formula that I have used, that is for cosec theta. Cosec theta is 1 upon sin theta. Manya, are you understanding? I'm writing just on like here and there. So, but I hope you're understanding the context, right? Yes. Yes. Yes, okay. Now, can you not take LCM here and LCM here also and tell me what will be the answer? If you take LCM here, will it become cos theta in the bottom? So, Yes. 1, see, look at this. This is 1, right? So, 1 into what is cos theta? 1 into cos theta is cos theta. So, that cos theta will get multiplied with this one. So, will it not become cos theta here? Do you understand this part? Yes. Manya? Yes, okay. Now, this is cos theta. So, cos theta into what is cos theta? 1. So, 1 into sin theta will be sin theta. This is a normal LCM that you were doing already correctly. And then cos theta into 1 is cos theta, so 1 into 1 is 1. Do you understand this part? Yes. Same thing we are doing here also. If you take sin theta here, LCM, this will become 1 into sin theta is sin theta into 1 is sin theta. Plus sin theta into 1 is sin theta. So 1 into cos theta will become cos theta. It's like a normal LCM I'm taking. And this will be 1 only. Because sin theta into what is sin theta? 1. So this 1 will get multiplied with this one. So 1 into 1 is 1. Understood this part? Yes. Okay. Now I'm writing the top part. Okay, I'm writing the top part. That means I'm writing the numerator. So the numerator is cos theta plus sin theta. Okay, cos theta plus sin theta. And then I'm just writing that in a bracket. Okay, and then plus 1 as it is. And then I am writing another part, which is this sin theta plus cos theta. But I'm just writing that down that as cos theta plus sin theta. So I've just written cos sin theta plus cos theta as cos theta plus sin theta. And then minus 1 as it is. Okay, and multiplied both of them. Why? Because there is no sign, that means there is multiplication. So what is cos theta into sin theta? It will be cos theta sin theta. Correct. Got it? Understood, Manya? Yes. Okay. Now imagine, Manya, that this is your A, and this is also your A, and this is your B, and this is also your B. So don't you think that you can see a formula here, A plus B into A minus B? What was the formula of A plus B into A minus B? Was it not A square minus B square? That was the formula, right? That we had done. Are you understanding? Yes. Yes. So using that formula, it will become A square. But what is A? Cos theta plus sin theta. So that means it is A and then square of that minus B square. So 1 square. Got it? And then upon cos theta into sin theta as it is. Manya, you know what? You can also write down all these steps in your notebook along with me only. So that you will also have the practice of writing it. Now you can see that there is another formula of A plus B whole square. You remember what was the formula of A plus B whole square, Manya? Yes. What was the formula of A plus B whole square? A square plus B square plus 2AB. Very good. Okay, so this will become A square, that means cos square theta, plus B square, that means sin square theta, plus 2AB, that means 2 cos theta sin theta. And done. Formula is done. Minus 1 square will be 1 only upon cos theta sin theta. Have you understood till this step, Manu? I would advise you that Yes. after I finish it, you take a picture also. Now, do you see that this is a trigonometric identity?
What was the first trigonometric identity? Was it not cos square theta plus sin square theta is 1? Yes. That was our first trigonometric identity. So this will become 1. And the second term, which is 2 cos theta sin theta, will be as it is. And then minus 1 as it is upon cos theta sin theta as it is. Now, don't you think, Manya, that this plus 1 and minus 1 will get cancelled? So what are you left with? You are left with, in the numerator, 2 cos theta sin theta upon cos theta sin theta. Now tell me, don't you think that this cos theta sin theta will get cancelled? Yes or no? Because they're similar term. So what is the answer? The answer is 2. Now, Manya, I would advise you to take a picture of this question, picture of this solution, because this question is very important. So you can take a picture. I'll show you the entire solution. So can you see the entire solution? I think 1 second. I think now you can take a picture. Just a moment, just a moment. The complete picture is not coming. Okay. Yes, now it is coming properly. So you can take a picture now. So what is the answer? The answer is 2. That means option number C. Right? Yes. Okay. Now we'll go to the next one. That means the third one. So for that, I will erase everything. Just a moment. Okay. All right. So now let's go to question number 3. I will erase all of these things here together by using this effect, I guess. Yeah. Okay, everything together. Yes. Now let's go to question number 3. So in question number 3, you can see, Manya, it says sec A plus tan A into 1 minus sin A will be what? Option number 1, sec A. Option number 2, sin A. Option number 3, cosec A. And option number D, cos A. So here I'll advise you, most of the questions, Manya, I'll just tell you one thing. Most of the questions क्या करना कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर सेक में है, कॉसेक में है, टैन में है, कॉट में है, तो उन सबको हमेशा साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है सेक ए प्लस टैन ए इनटू 1 माइनस साइन ए, राइट? ओके, सो कैसे सॉल्व करना है इसको, लेट्स अंडरस्टैंड. सेक ए को कैन वी नॉट राइट ऑन 1 अपॉन कॉस ए? ऑफ कोर्स वी कैन राइट ऑन फॉर्मूला. ओके, tan a को can you not write down sin upon cos a? क्यों? Because ये formula है. Manya, Yes. you remember these formulas? These are very important formulas. Tan theta जो होता है वो sin theta upon cos theta होता है. Cot theta जो होगा वो exactly इसका उल्टा होता है, because you know tan and cot are reciprocal to each other. So this will become cos theta upon sin theta. And same way remember cosec theta. So I'm just giving you all the trigonometric ratios कि उसको हम sin और cos में कैसे लिखते हैं. Cosec theta को we can write on 1 upon sin theta और sec theta को we can write on 1 upon cos theta. So ये चारों formulas आप बिल्कुल ध्यान रखना. Most of the questions इसमें भी convert करके you can solve. ठीक है? You can take a picture of this part as well. Okay, तो यहाँ पे मान्या मैंने वही किया है. Sec A को I have written as 1 upon cos A, tan A को I have written as sin A upon cos A, और यहाँ पे 1 minus sin A इसको कुछ कर ही नहीं सकते, तो let's keep it as it is. अब इस वाले टर्म के साथ क्या करेंगे? We'll take cos A LCM. LCM will be cos A. So what will come in the numerator? Of course 1 plus sin A, because हमारा denominator जो है वो same है. And then 1 minus sin A as it is. Now don't you think कि numerator में यहाँ पे 1 plus sin A और 1 minus sin A actually multiply हो रहा है? So it's 1 plus sin A into 1 minus sin A, right? And then upon cos A as it is. You understand this?
Yes. Now, अगर माने आप नोटिस करो यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला दिख रहा है, ये अगर a है तो ये भी a है, और ये अगर b है तो ये भी b है, और यहाँ पे you can also see कि plus minus भी है. So is it not in the formula of a plus b into a minus b? और ये भी एक बहुत ही famous formula है. What is a plus b into a minus b? It will be a square minus b square. By using this formula, can we not say 1 square, because a is 1, minus b square, that means sine square a, right? And then upon cos a as it is. Now 1 square we can write down as 1 minus sine square a, I can write down as sine square a upon cos a as it is. Now, Manya, to simplify the numerator, we are going to use the first trigonometric identity. And what was that? Cos square a plus sine square a is equal to 1. If you want, you can also use theta. So, यहाँ से cos square a क्या होगा? Will it not become 1 minus sine square a? So, if you notice, हमने एक formula से एक और formula निकाल लिया है. 1 minus sine square a is nothing but cos square a. यहाँ पे जो हमारे पास ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया है मान्या, इसके प्लेस पे कैन वी नॉट यूज दिस फॉर्मूला 1 विच इज cos स्क्वायर ए, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए. नाउ टेल मी व्हाट इज cos स्क्वायर ए? इज इट नॉट cos ए इनटू cos ए? ऑफ कोर्स, बिकॉज ये स्क्वायर है. इफ आई राइट ऑन 4 स्क्वायर, व्हाट इज 4 स्क्वायर? 4 into 4. So if I have cos square a, will it not be cos a into cos a? And then नीचे में cos a, of course, as it is है. तो मान्या, this and this will get cancelled. So what is your answer? Your answer is cos a. And that is the answer. So your option number, let's check. Our answer is cos a. So in in question number 3, we have option number D, which is cos a. Clear, मान्या? आपको ये समझ आया properly? Yes. ठीक है. Let's go to now question number. Oh, okay. I wanted you to take a picture. Yes, okay, it came. I just did undo. Can you take a picture of this part, Manya, and keep it with yourself? This is question number 3. Let me show you the complete solution. See, this is question number 3. You got it? Sorry. Question. Like you have taken the picture. No. Yeah. Done. Yes. Okay. So now I'll erase this, and now let's go to the last question of this MCQ or even single choice question. Yes. So are you suffering from cold and cough? Or you're okay, Manya? You're not well? Both. Oh, okay. All right. When is your next exam? Which paper is it? Your favorite? 2nd March. 2nd March. Yes, Oh, that I think 2nd March. Oh my God, that day is my birthday. I that is forgot it. your birthday is on 2nd March. Oh, Yes. okay. So let's see whether we are meeting on your birthday or not. So I think Yes, 2nd of March we are course going we to will meet. meet. We are going to meet in, yes. Okay. So all right. So are you going to celebrate your birthday? No. Okay. So maybe like it's just you are going to cut a cake on your birthday, right? Birthday Yeah. after my exams. You are going to celebrate your birthday after your exams. After after exams, I will celebrate. All right. Okay. Let's solve this. 1 plus tan square a upon 1 plus cot square. So मान्य यहाँ पे you can notice कि दोनों ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में है. सेकेंड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था sec square a minus tan square a is 1, right? So यहाँ से can you not see कि हम sec square a को लिख सकते हैं 1 plus tan square a, और यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, और
which is for 1 plus tan square a. तो यहाँ से 1 plus tan square a के लिए what can we write? Sec square a. So can we not write on here sec square a? 1 plus Yes. tan square a की जगह पे we can write on sec square a because we are getting it. Similarly, we can do for the 1 plus cot square a also. The third trigonometric identity. Was that not cosec square a minus cot square a is equal to 1? It was that, right? So from here, cosec square a will be equal to 1 plus cot square a, right? Now, Yes. what is 1 plus cot square a? You have got the formula cosec square a. So can you not write down cosec square a here? You can write. Now, this is like a sec square a divided by cosec square a, Manu, right? Yes. Now let's convert this into sine and cos. So what was the formula of sec theta? Was it not 1 upon cos theta? Yes. Yes. So what will be sec square a? It will become 1 upon cos square a. Okay. And the Yes. division sign as it is. What is cosec square a? What was the formula? Was it not 1 upon sine square a? Yes. It was, right? Cosec theta was 1 upon sine theta. So what is cosec square theta? 1 upon sine square theta. So what is cosec square a? 1 upon sine square a. ये जो फॉर्मूला मैंने वो बबल बना के लिखा था मान्या, ओके, सो आप वो फॉर्मूलाज बिल्कुल याद रखना, ठीक है. नाउ विल दिस नॉट बिकम 1 अपॉन cos square a as it is, और ये डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो व्हाट चेंजेस विल यू ब्रिंग टू दिस मान्या? ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, राइट? सो विल इट नॉट बिकम sin square a upon 1? ये वाला आपको पता होगा, राइट? कि अगर हम डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो दैट बिकम्स like that will become the reciprocal, right? अभी Yes. this is like normal multiplication. 1 और sin square a को multiply करेंगे तो sin square a upon cos square a, और 1 को multiply करेंगे तो cos square a, right? Now tell me Manya, what was the formula for sin theta upon cos theta? What was the formula for sin theta upon cos theta? Was it not tan theta? It Yes. was tan theta, right? So यहाँ पर अगर हमने square लिख दिया तो will it not become tan square theta? Yes. So that is why this will become tan square theta. So the answer is tan square theta. आप इसका भी screenshot ले लो. Oh, okay, 1 second. We are for yes. So see, we have got the answer tan square a. Sorry, not theta, of course, because यहाँ पे हमारा question angle जो है वो a के term में है. So I'll remove this and I'll just write down a here. There is tan square a. So option number which is correct, option number 4. Now you can take a picture. Done. Done. Okay. So we have completed the MCQs, right? Now let's check what do we have next. So in the next one, question number 5, Manya, you can notice that you are having all the proof questions. Manya, right? So shall we solve the Yes. questions, right? Because ये understand करना होगा कैसे solve होगा, कैसे क्या करना है. So you have to understand how exactly it is going to happen. So let's try to solve the questions one by one, right? Okay. Okay, so let me take the picture of first and second question, and then we'll just go to another screen and we'll be solving question number 1 and question number 2. Okay, let's try to solve as many questions as possible. So this is our question number 1 and question number 2 of question number 5. So of course, all the questions, Manya, in question number 5 are the proof questions. That means we just have to do LHS is equal to RHS, right? So यहाँ पे Manya, in the first question I'm saying, what is LHS given? Is it not given cosec theta minus cot theta whole square? Right? That is given.
we have to prove that this will be equal to this. That means RHS हमारा ये होना चाहिए. Correct? Next, tell me, what is cosec theta? अभी हमने convert किया था sin में. 1 upon sin theta by formula. But what is cot theta? Cot theta was cos theta upon sin theta. आपको ये step समझ में आया? मैंने कुछ भी नहीं किया है मानने यहाँ पे. Just I have used the formulas. That's it. Clear? Yes. अभी inside the bracket अगर हम LCM लेंगे तो will it not become sin theta और जो numerator है वो हो जाएगा 1 minus cos theta? Yes. Yes, and then ये square as it is. But here you notice one thing मान्या, ये जो square है ये पूरे terms पे है. That means numerator पे भी वो square है और denominator पे भी square है, तो वो हम separate कर सकते हैं. 1 minus cos theta पे square है और sin theta पे भी square है, which is nothing but sin square theta. Right? Next, I'm writing it here. 1 minus cos theta whole square, is it not same as 1 minus cos theta into 1 minus cos theta? Yes. अगर हम 2 square लिखते हैं तो we can write on that as 2 into 2. अगर हम 5 square लिखते हैं तो we can write on that as 5 into 5. So अगर हमने 1 minus cos theta का square लिखा है तो of course we can write on that as 1 minus cos theta into 1 minus cos theta. Next, in the denominator, we are going to use the first trigonometric identity. And what was that? Sin square theta plus cos square theta was 1. So from here, can you not tell me what will be sin square theta? It will become 1 minus cos square theta. तो ये जो sin square theta है वही हमारे पास यहाँ भी है मान्य. इसके जगह पे can we not use this formula to make our calculation much easier? ठीक है. अभी is it okay मान्य अगर मैं इस 1 को 1 square कर दूं? कोई difference नहीं होगा because 1 square will still be 1 only, right? Yes. उसका reason है हमने ऐसा क्यों किया. So let's understand. 1 minus cos theta and 1 minus cos theta numerator में. Denominator में can you see कि ये वाला formula बन रहा है a square minus b square? Of course, where a is 1 and b is cos theta. So a square minus b square का formula क्या है? a minus b into a plus b. So ये formula use करके can I not write down this as 1 minus cos theta into 1 plus cos theta? मान्य? Yes. Right? और यहाँ पे मान्या we can cancel this and this. So क्या बचा हमारे पास? 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Right? Yes. और अगर आप नोटिस करो तो यही तो हमारा RHS है. Hence proved. The best part to write down proved with the double lines. Understood? You can take a picture of this. This was your question number 5-2. Right? Sorry, question number 5-1. So you can take a screenshot. Done. Let me know once you are done. We'll go to question number 2 then. Done. Done. Okay. So let's go to question number 2. For that, let me just paste the question once again. Okay. So question number 2. Can you read the question, Manya? Question number 2 वो भी prove करना है हमें. So question number 2 में आप just एक बार read कर लो. Cos theta minus cot theta square equal 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Second है cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A equal 2 sec. 2 sec A. So ये वाला question तो we have done, Manya, right? We are going to start from question number 2. Correct? So इसमें भी हमें क्या करना है मान्या? हमें prove ही करना है, right? So you can see कि LHS में ये part है और RHS में ये है, right? So Manya, tell me on the LHS, what do we have?
I'm just writing the question as it is. Cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A. Right? Correct, Manu? Yes. Okay. Do you know यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे will take LCM. But दोनों ही different terms है, तो दोनों को multiply कर देंगे normal. So 1 plus sin A और cos A, right? तो ये हो गया LCM. Now tell me मान्या, अगर 1 plus sin A यहाँ पे है और ये 1 plus sin A same thing यहाँ पे है, तो इस वाले टर्म में हम of course cos A को multiply करेंगे, तो ही हमारे पास ये 1 plus sin A into cos A आएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये बस एलसीएम ले रहे हैं हम यहाँ पे. तो जो ऊपर वाला टर्म है, डोंट यू थिंक हमें उसे cos A से ही मल्टीप्लाई करना है, राइट? सी, Yes. ये जो 1 plus sin A है, ये सेम है यहाँ पे, राइट? तो ये जो बचा है यहाँ पे cos A, उसको हम इस cos A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी आवर cos square A प्लस यहाँ पे cos A ऑलरेडी है मान्या, तो ये cos A ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो विल इट नॉट बिकम 1 plus sin A into 1 plus sin A, which is same as 1 plus sin A whole square? Do you understand this? Yes. Okay. अभी बहुत इजी है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मान्या, जस्ट न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है. So cos square A will be as it is. यहाँ पे can you say कि ये फॉर्मूला है A plus B का whole square, and I know that you know the formula already. It's A square, that means 1 square, plus B square, that means sin square A, plus 2AB, that means 2 into 1 into sin A. So it will become 2 sin. Do you understand this? सही है मान्या? Got it? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे 1 plus sin as it is और cos से as it is रहा है. यहाँ पे if you notice, यहाँ पे हमारा एक trigonometric identity बन रहा है, which is cos square A plus sin square A. What is the value of cos square A plus sin square A? Will it not be 1? The first trigonometric identity मान्य, right? And then plus Yes. ये जो 1 square है वो तो 1 ही है, तो उसको हम 1 लिख देते हैं वापस. No need to write down 1 square because उसका वैल्यू भी 1 ही होने वाला है. And then this plus 2 sin A as it is, ठीक है, अपॉन ये जो 1 plus sin है वो as it is हुआ, और जो ये cos है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सेम यहां से मान्या, इट्स वेरी सिंपल अगेन. 1 plus 1 क्या होगा? 1 plus 1 is 2, so 2 plus 2 sin A, and then upon 1 plus sin A into cos A. मान्या, got it? अब Yes. न्यूमरेटर से can we not take this 2 and this 2 common? तो जैसे हम वो 2 कॉमन लेंगे, Yes. विल गेट 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए लेंगे, और यहाँ पे मैंने cos ए को पहले लिखा है और देन 1 प्लस साइन ए को लिख रही हूँ. इट्स द सेम थिंग, बट यू कैन नोटिस कि ये जो 1 प्लस साइन ए है और ये जो 1 प्लस साइन ए है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट 2 अपॉन cos ए, राइट? Yes. बट डोंट यू थिंक कि 2 अपॉन cos ए को हम 2 into 1 अपॉन cos ए भी लिख सकते हैं? Yes. But what is 1 upon cos A? Is it not sec A? And that's it. और ये हमारा RHS है मान्या, and hence proved. And we are done. Understood? Yes. Is it very clear? Yes. Is it very clear? Okay. All right. So we are done with question number 1, and we are done with question number 2. Right? Now let's go to question number 5. Question number 3 now. Right? See, 1 and 2 are done. Now we have question number 3, we have question number 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Let's try, Manya, to solve the questions, as many questions as possible. जो भी बाकी का questions होगा, you are going to look at the solution on your own, और steps आप try करना खुद से समझने का. अगर कुछ भी समझ नहीं आएगा तो you can ask me.
Okay. And next class we are going to start with polynomial. Okay. 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 So now let's solve this. So I'll tell you that question number 3 is actually little lengthy, Manya. So I'll do one thing. I'll make you understand question number 3 only because it is little lengthy. So I'll just copy the question from here and I'll just make you understand on one note. They have also given one hint, and the hint is that you just have to convert everything in terms of sin theta and cos theta. ये इनका hint. Okay, तो यहाँ पे मानिए मेरी हमारा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो, तो let's try to solve it. अभी मानिए just be very focused ताकि ये आपको पूरा step clear समझ आए. ठीक है. और एक भी step में if you feel like you have not understood anything and I have gone too fast, आप please stop कर देना. Okay? अब बोला कि no, I have not understood. Explain me again. ठीक है? Ready? Yes. ओके. सो यहाँ पे भी हमें प्रूव करना है. प्रूव क्या करना है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा शुड बी इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cos sec थीटा. यहाँ पे आपको हिंट दिया है. एग्जाम्स में हिंट नहीं होते हैं माना. ओके. सो द ओनली हिंट आई कैन गिव यू कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप ट्राई करना कि हम उसको साइन और कॉस के टर्म में सिंप्लीफाई करें और आगे और सॉल्व करें. ओके. सो यहाँ पे भी वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द एलएचएस. सो व्हाट इज एलएचएस? tan थीटा अपॉन cot थीटा. Now do not break your attention here मान्या, because अगर एक भी स्टेप में अटेंशन ब्रेक हुआ तो मे बी नहीं समझ आएगा बाकी का. So just try to concentrate on this part so that आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. So यहाँ पे what are we going to do? पहले तो tan थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में. तो what is the formula? Sin theta by cos theta. So I have used sin theta by cos theta in the numerator upon 1 minus cot theta का फॉर्मूला क्या होगा? Exactly उल्टा. Cos theta by sin theta, right? Plus cot theta, right? इस cot theta का फॉर्मूला क्या होगा? Cos theta by sin theta. यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग वे में लिखा है, but it's the same thing. Upon 1 minus tan theta को क्या लिख सकते हैं? Of course sin theta by cos theta. Have you understood this step? माना मैंने कुछ नहीं किया है, just सबको sin और cos में convert कर दिया. You understood this step? Yes. Yes. Okay. Let's go to the next step. अभी क्या करेंगे हम? न्यूमरेटर में जो sin थीटा बाई cos थीटा है मान्या, उसको हम वैसे ही रहने देंगे. ठीक है. sin थीटा जो बाई cos थीटा है न्यूमरेटर में, नीचे that means in the denominator we will take LCM. So don't you think अगर मैंने इसको 1 by 1 कर दिया तो यहाँ का LCM क्या होगा? sin थीटा as it is. और ये 1 into sin थीटा will be sin थीटा. sin थीटा into 1 न्यूमरेटर वाला 1. So क्या हो जाएगा वो? sin थीटा माइनस ये sin थीटा इंटू 1 इज sin थीटा, सो 1 इंटू cos थीटा विल बी cos थीटा. ये एलसीएम वाला पार्ट मानना क्लियर है आपको? Yes. ठीक है. और ये जो है वो डिवीजन साइन है. इसके ऊपर का न्यूमरेटर और उसके नीचे का डिनोमिनेटर. ओके. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. प्लस यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे. cos थीटा अपॉन sin थीटा को हम वैसे ही रहने देते हैं और नीचे विल टेक एलसीएम. सो ऑफ कोर्स दिस विल बिकम 1. यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो cos थीटा विल बी एज इट इज और यहाँ पे 1 इंटू cos थीटा इज cos थीटा, सो cos थीटा इंटू 1 विल cos थीटा माइनस यहाँ पे तो ये sin थीटा एज इट इज होगा. अगेन माय क्वेश्चन इज कि एलसीएम वाला पार्ट समझ आया मान्या? Yes. ओके. अभी क्या करेंगे मान्या? हम ऑफ कोर्स इस पार्ट को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में है, दैट मींस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, राइट? सेम चीज हम इसके साथ भी कर सकते हैं. cos थीटा अपॉन sin थीटा and then this division sign cos theta minus sin theta upon cos theta. ये वाला स्टेप क्लियर है? यानी बस अगर हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 5 है तो कैन यू नॉट राइट डाउन दैट इज 2 डिवीजन साइन एंड दैट 5. सेम थिंग मैंने यहाँ पे किया है, बस हमारा 2 बहुत बड़ा है, 5 बहुत बड़ा है. दैट्स इट. गॉट इट? Yes. यस. ओके. इसके बाद क्या करेंगे? मान लिया इसके बाद ये डिवीजन साइन को ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और जैसे ही हम उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, यू नो कि ये वाला जो टर्म है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा.
तो ये साइन थीटा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस सेम thing we'll be doing here also, Manya. So cos theta upon sin theta as it is, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लीकेशन साइन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. So this will become cos theta upon cos theta minus sin theta. आई होप ये स्टेप क्लियर है. दैट इज वाई मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया. ये थोड़ा लेंदी है बट ये डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस लेंदी है थोड़ा. ओके, सो मान्या, डोंट यू थिंक हम एलएचएस को ऑफ कोर्स, सॉरी, न्यूमरेटर को ऑफ कोर्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो क्या होगा, ये साइन थीटा और साइन थीटा को अगर मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे जस्ट लेट्स राइट डाउन एज इट इज. ओके, cos theta and then sin theta minus cos theta, ठीक है. प्लस सेम चीज यहाँ पे भी होगा. इफ यू कैन सी, ये cos theta अगर cos theta को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट cos square theta और डिनोमिनेटर में वी विल गेट sin theta. One second. Okay, I think I have to go little down because I'm unable to write it here. Yes. Okay. Oh, yeah. So I can write down here sin theta and okay. Okay. Yes, sin theta and then in bracket I have cos theta minus sin theta. ठीक है माने, करेक्ट. अभी माने यू टेल मी वन थिंग, कि अगर मेरे पास Yes. एक है एक्सप्रेशन a माइनस बी, ठीक है, तो इस a माइनस बी को कैन आई राइट डाउन b माइनस a, एक माइनस साइन बाहर लिखकर. डू यू थिंक कि ये दोनों सेम ही है? सी, मैंने क्या किया, पहले मैंने a माइनस बी को जस्ट स्वैप कर दिया, b माइनस a किया. बट ऐसे ही तो नहीं कर सकते क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. तो यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकाले. सेम थिंग अगर मैं यहाँ भी करूँ मान्या, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, बट यहाँ पे ठीक उसका उल्टा है, राइट. तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को इफ आई वांट, मैं इसको एग्जैक्टली स्विच करूंगी विथ माइनस साइन आउटसाइड. तो वो cos थीटा माइनस साइन थीटा को मैंने किया है sin थीटा माइनस cos थीटा, बट एक माइनस साइन एक्स्ट्रा बाहर आएगा, राइट. बट वो माइनस और ये प्लस आपस में मिलके हो जाएगा प्लस इंटू माइनस इज माइनस. तो यहाँ पे मैं एक सिंगल साइन लिख देती हूँ माइनस. ऐसा क्यों किया? सो दैट मान्या हमारे पास ये सेम टर्म आ जाए, ये भी sin थीटा माइनस cos थीटा और ये भी sin थीटा माइनस cos थीटा. ओके, नेक्स्ट. Yes. अभी नेक्स्ट जो मैं करूंगी मान्या वो भी एक अंडरस्टैंडिंग होगा, वो एलसीएम है, बट मैं आपको एक बार अंडरस्टैंड कराती हूँ एक क्वेश्चन से. इफ आई हैव 1/5 प्लस 1/7, कैन यू टेल मी मान्या किसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 35 अगर आप नोटिस करो तो, Yes. राइट. ओके, तो कैसे 35 आया? दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे भी अब इस पूरे टर्म का हम लोग एलसीएम लेंगे तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ओनली, वो भी डिनोमिनेटर में. बट एक बात ध्यान रखना है माना कि अगर हमारे पास नंबर्स नहीं है और तब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो अगर कोई भी टर्म्स जो रिपीटेड है उसको हम दो बार नहीं लिखेंगे, उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे. तो ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है दैट विल कम ओनली वंस, ठीक है, क्योंकि वो दोनों कॉमन है. तो मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा, सो दैट विल बिकम कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है. अभी यहाँ से Yes. मानिए नोटिस वन थिंग, ये जो cos थीटा है वो भी यहाँ पे है और ये जो sin थीटा माइनस cos थीटा है वो भी यहाँ पे. तो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग होगा विच इज sin थीटा, ये आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. तो साइन स्क्वायर थीटा वो ऑलरेडी है और एक और sin थीटा मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बिकम sin क्यूब थीटा. सो 2 जो है वो हो जाएगा 1, ठीक है. ऑलमोस्ट हम आंसर के पास पहुंच रहे हैं. ओके, माइनस यहाँ पे भी यू कैन सी द सेम थिंग कि यहाँ पे ये जो साइन थीटा है वो साइन थीटा यहाँ पे है और ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है वो यहाँ पे है, राइट. तो इसमें क्या रिमेनिंग है, एक्स्ट्रा है, ये कॉस थीटा.
तो ये cos थीटा जो है वो इस cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा cos क्यूब थीटा, ठीक है। ओके, अभी इसके बाद मान्या वी आर गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला ऑफ a cube minus b cube. Okay, let me make it little smaller. Yeah. So do you remember a cube minus b cube का formula क्या था? I'll tell you. It was a minus b into a square plus ab plus b square. ये formula था a cube minus b cube. तो अगर ये formula हम numerator में use करेंगे मान्या, it will become a minus b. That means sin theta minus cos theta. Okay, cube तो हट जाएगा because यहाँ भी cube हटा है, minus b हुआ. And then in bracket it is a square. मतलब a क्या है? sin theta. sin theta का square क्या होगा? sin square theta. Okay, plus ab. ab that means a is sin theta and b is cos theta. So a into b will become sin theta cos theta. And then plus b square. b क्या है? cos theta. So cos theta square that means cos square theta. And then upon जो है जैसे है we'll write on as it is. cos theta sin theta. And then into sin theta minus cos theta. मान्या we are almost done. ये क्वेश्चन बस कंप्लीट ही होने वाला है. ओके, नाउ कैन यू सी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा? यस. सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? यू आर लेफ्ट विथ sin square theta plus, I'm writing this first, cos square theta, and then plus sin theta cos theta as it is. ठीक है, and then upon ये भी sin theta cos theta है. If you want to keep it as cos theta sin theta, you can write cos theta sin theta. Okay, now Manya, tell me, what is the value of sin square theta plus cos square theta? Is it not 1? Yes. It is 1 because ये हमारा पहला trigonometric identity है. और plus sin theta cos theta as it is, and then upon cos theta sin theta as it is. यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज होगा मान्या, which is अगर हमारे पास 2 plus 3 by 6 है, तो इसको हमने 6, ये वाला स्टेप कैसे लिखा? पहले वाला स्टेप ये होगा 2 by 6 plus 3 by 6. तो ही हम यहाँ पे आए, मतलब ये जो एलसीएम है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक स्टेप पहले चले गए. यहाँ पे भी वी आर गोइंग टू डू वन द सेम थिंग मानिए. ओके, सो ये जो cos थीटा sin थीटा आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसको हम सेपरेट करेंगे. दिस विल बिकम 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा, और जो दूसरा होगा वो हो जाएगा sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, जिसको हम ऑफ कोर्स sin थीटा cos थीटा भी लिख सकते हैं. तो डोंट यू थिंक ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली 1 ही है? ऑफ कोर्स ये तो 1 है, सो दैट विल बिकम 1 ओनली. Yes. और ये जो 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा इनटू 1 अपॉन sin थीटा, एंड देन प्लस ये 1 एज इट इज. नाउ 1 अपॉन sec थीटा का फॉर्मूला क्या था? sec थीटा. और 1 अपॉन sin थीटा का फॉर्मूला क्या था? cosec theta. And then ये है plus 1. So this is nothing but I'm just rewriting it. 1 plus sec theta into cosec theta. This is your RHS मान्या. So ये easily एक 6 mark का question हो सकता है. क्या ये difficult था मान्या? ये difficult नहीं था. You can say कि ये lengthy था, right? It's just इसमें LCM formulas, some basic formulas, some trigonometric identities, यही सारी चीजें यूज हुई है. So we have done question number, I think it was question number 4, right? This was question number 3, not 4, question number 3. So you can take a picture of this, and yeah. This is super big, so you can take picture in 2 parts. So you can take a picture right now. I'll show you the other part also. So मान्या, ये सारे जो आप पिक्चर्स ले रहे हो, आप एक एक बार इन सब क्वेश्चंस को, सब सोल्यूशन को एक बार नोटबुक में आप खुद से सॉल्व करना और चेक करना कि आपको ये सारे स्टेप्स वापस से क्लियर हो रहे हैं कि नहीं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू नो व्हाट मान्या, अगर कोई स्टूडेंट बहुत भी अच्छा है ना, और जस्ट वो अगर देख रहा है और अगर वो प्रैक्टिस हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, तो मे बी एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. बट द वन हु इज लाइक प्रैक्टिसिंग मोर, लिख ज्यादा रहा है, तो उसको थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा.
कभी क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। माने आई वुड एडवाइस कि आप भी एक बार इसको लिख के वापस से प्रैक्टिस कर लेना. सो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर, you have taken the picture? Yes. Okay. So we are done with question number 3 also. Now we have question number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So माने आप ट्राई करना ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का. आई ट्राई कि मैं इस 4 से 10 तक को एक यूट्यूब वीडियो में एक्सप्लेन करके आई शेयर द लिंक विथ यू, और आप एक बार वीडियो देख के समझ लेना. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल.